Sunday evening talks are oasis of peace, like how Shanti Sarovar is helping as a oasis, like Sunday evening talks also helping in different areas of life, not only personal life, professional life, spiritual life, it is helping to make it better, right? So you all feel that? Those who come regularly? Yes? Yeah. So today we have a special talk on good parenting skills, right? So before we start our talk today, we have a beautiful song, melodious song by Sister Vishnu Priya ji. Let's welcome Sister Vishnu Priya, who is a professional singer, who is serving the institution as well as public with her voice. She is gifted with very melodious voice and she is using for the service of humanity and God. She has won many awards like Gana Kokila Award, Kokilamma Award, Super Singer Award, many awards like that, and she went up to Super 7 in 2015 Padutatiyaga also. Let's have a big round of applause for Sister Vishnu Priya, and she will be beautifully rendering a beautiful song for all of us. So let's sit in silence and just try to absorb the meaning of it and try to feel the meaning of the song. Vishnu Priya sister. हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा देंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है कुछ भी उसको, शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। मन से मन की तार मिला, आशाओं की फूल खिला। याद न कर जो बीत चला, शुभ संकल्पों के दीप जला। शुभ संकल्पों के दीप जला, शुभ संकल्पों के दीप जला। तन के भान बिना तुम आओ, तन के भान बिना तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। हिम्मत का एक
कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सोच न कर तू, शोक न कर, रेती के घरौंदों के खातिर व्यर्थ गवाना, अनमोल आंसू माटी के खिलौनों के खातिर। मैं और मेरा त्याग जरा तू, मैं और मेरा त्याग जरा तू, वो सौभाग्य जगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। Shanti, thank you. Thank you very much. You all enjoyed? You all enjoyed? Have you given your responsibilities or your burdens to God? Yes? Huh? You know this concept? Yes? So practicing this, we will feel light, we feel easy, we can be flexible any situation, right? So I just would like to know how many of you are coming for the first time to Shanti Sarovar? Very few. And Sunday evening talk? Yes. Thank you for coming and welcome to all to beautiful Shanti Sarovar, Brahma Kumari's South India's largest retreat center, Oasis of Peace, where you experience lot of energy, positive, and lot of happiness, love, care. You all feel that? Right? It's far, so I cannot see your expressions. I cannot hear your words. Yeah? Yes. So we have Sunday evening talks, regular series of Shanti Sarovar every Sunday, 6:30 to 8 o'clock. And along with that, the byproduct of this is Bala Brindavanam, specially for the children. So now also the session is happening in other building for children. If you want to drop your children, our brothers can help you dropping there. Any children are sitting here? Those who would like to? किंशुक भाई हेल्प करो उनको वहाँ पर बिठाओ. So what is the topic for the day? What is the topic for the day? Art of parenting. Do we need a session for that? हाँ? आजकल तो हम ये सब देख रहे हैं, यूट्यूब में ये सब भरा पड़ा है, या बहुत सारे सेशंस ये सब सुनते हैं. If you go back your childhood days or taking our parents, did they had all these sessions? या ट्रेनर चाहिए उसके लिए, और तभी हमारा बचपन ठीक था ना? या was your childhood good? Yes? Yeah. Without any training also, we all were good. And we are good. Yes? So what made the parenting skills
come in picture, and then we need a special program for this. What made the world like this? At that time, challenges were less. Yeah, yes. Any other answers? क्यों ये सब चाहिए? जरूरी है क्या? Why it is all needed? So think about it. Is it really necessary? And yes, of course, it is needed. Nowadays, we are seeing the relationship challenges, especially parents and children also. Sorry? For a better life, also, we need this kind of sessions. Yes. So, somewhere we have programmed ourselves and we are programming our children also in a very different way. We have come out from the track, whatever the reasons might be. So, now coming back in track so that will help us how we can tackle or how we manage our own selves as parents, as well as we can manage our children also. As experimental basis, we had a special program yesterday about the same theme, art of parenting, for the parents whose children are in professional sports. And it was very well received, and they have given so many inputs like we need more of this kind of sessions, especially on anger management and failure management. So those things were the requests from all the parents. So we thought to have the same topic for Sunday evening talk for all of you also. So for this to enlighten us, empower us, we have very, very experienced and very beautiful speaker amongst us. Let's welcome Brother E.V. Gireesh ji with a round of applause. So you might have seen many videos in YouTube about parenting skills and different things in different perspectives. But if we can add the spiritual perspective also in that, that becomes complete, that becomes harmonious. Yes? So in that level, to empower us and to enlighten us, we have Brother E.V. Gireesh with us, behavioral trainer, counselor, psychologist, storyteller, and mentor, you can call anything. And he is helping the society in different ways, different levels, in corporate world, in the private world, in the government, and especially the one-to-one basis also he is helping. Brother Gireesh is a competent management professional and trainer with over 25 years of experience in imparting behavioral training programs for corporate houses, educational and social institutions. He is an international transformational speaker and success coach with demonstrated ability to function effectively in an adverse environment as well as train with diverse learning styles. So he has much experience as a behavioral trainer, as a psychologist. He knows the psyche of human beings and he knows how the behaviors of people are enacted because of their mindsets. So in that level, he will help us in understanding and means practicing the parenting skills. So let's welcome once again Brother Gireesh with a round of applause for the Sunday evening talk on parenting skills. Om Shanti. I want you to repeat this word, Om Shanti. Can you say it with a little smile on your faces? With a lot of love, respect, a sense of gratitude, say Om Shanti. With a lot of energy, enthusiasm, and inner power, say Om Shanti. Wonderful. Good news that you understand emotions. Yeah.
I can see the difference in the way you uttered that word Om Shanti. Namaste and a warm good evening to one and all present here. Before I start engaging each one of us on this beautiful topic of the art of parenting, is it okay if I use little Hindi also? Or you want me to stick to English only? Hindi is also okay? Hindi, English is fine? If it is fine, raise your hand. Oh, wonderful, good. Uh, Before we start thinking about the art of parenting, what we need to understand is art of parenting is not about the child, it's about the parent. So mind it, if you have your kid sitting next to you, tomorrow onwards he is going to pinpoint your behavior and say, look what uncle told yesterday. And this is not what you're supposed to do, because this is how he spoke about the behavior of parents. Uh, so I want you to listen to it with a very open mind. And in case you find that whatever Gireesh is saying, looks to be little impractical, doesn't work, I would appreciate if you can stand up and can interact with me, because I don't want you to go back home with a little doubt in your mind whether it will work or not. Uh, I think parenting is one of the most beautiful things that one can do on planet Earth. If you have seen a baby planting a seed, waiting to see the sprout coming, and then it is taking a shape of a small plant, and the flowering of the plant, the buds, the fruits, that's what precisely parenting is all about. And if parenting is an art, I think we need to invest our time and energy in learning that particular art. You just cannot hip hop on a bicycle and start riding it. It's not possible. You get trained on it. You just cannot sit on a seat of a car or the driver's seat and start driving a car. You take formal training for it. So, in today's contemporary and complex world, I think one needs to invest little time and energy in learning this beautiful art of parenting. And the challenge is, without being equipped to handle a life, we produce one. And the fallout of this particular combination is so stressful for the parents. And if I need to give you a very simple example of my little experiences of my life, I had the privilege of working with a group of gynecologists, and we did a lot of research and training programs with the Federation of Gynecological Society of India, we call as a FOXY. And across pan India, we went to each and every sector of India, and we did special programs for gynecologists and obstetricians. And while working with them and interacting with them on a project called as Super Mom, Super Baby program, so we will handle a mother the 9 months of pregnancy and would see to it that the childbirth outcome is very good. So when we were doing this particular program, when I used to interact with the would-be mothers, and when the mother would deliver the baby, माँ जब बच्चे को जन्म देती है, oh ho ho, you can see, the beauty of joy in the mother's, eyes. Or she is on seventh heaven. When she cuddles the baby up her chest, वो जो खुशी है शायद हम पुरुष कभी समझ ही नहीं सकते, because what she has undergone for waiting for 9 months and the delivery pain and the the stress and strain she has to experience. And जब वो माँ बच्चे को अपने गले से लगाती है, believe me, there are no words I can express. I mean, that's the kind of experience the mother has when she delivers a baby. And fast forward the whole scenario to another 15 years, the same mom brings the 15-year-old child studying in the 10th standard to counselor Gireesh
और मम्मी मुझसे कहती सर नाक में दम कर रखा, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, खाता नहीं है। हेलो, कहाँ गया जन्नत, कहाँ गया सेवेंथ हेवन? Just 15 years. So at one point of time, this baby was the eye of your, I mean, the center of your eye. I mean, suddenly वो इतना stressful हो गया आपको. And it is so unfortunate to make this statement. When I ask people, what is the reasons for your stress in life? Out of the 8 primary reasons what psychologist has understood, 8 primary reasons what man faces with stress, उसमें एक स्ट्रेस का कारण पता है क्या है? Very categorically across the whole of the globe they have said it is children. And in one of the audiences I was sharing कि is I mean children the cause of stress, तो जितने भी वहां बहनें बैठी थी, माताएं बैठी थी, मदर्स बैठी, सबने हाथ ऊपर उठा के, और एक मदर दूसरे मदर के लिए कह रही थी सर ये झांसी की रानी है, इसने पहला टेंशन पैदा किया, रुकी नहीं, शी वेंट फॉर द सेकंड टेंशन आल्सो, एंड व्हाट शी वाज स्पीकिंग अबाउट वाज द चाइल्ड, शी वेंट फॉर द सेकंड चाइल्ड. I mean, how can you call child a reason for stress? How can you call a child a reason? It's life. And the reason is because we have not understood things in the right perspective. And that's precisely the reason we are under stress because of parenting. And if I need to tell you 2 primary thought or maybe an emotion or a mindset which will by default give you stress, any amount of you trying to handle yourself, experience peace, it will just not happen. And that is, first is ego. So the first belief that you need to break, parent is always right. Just because the child is little, and if I need to tell you, I mean little on the higher side, when parenting is equal to caring for a child is tantamounting to controlling the child. And all typical mothers, especially Indian mothers, with a lot of pain in their heart, वो मेरे से कहते सर कितना हमने इनके लिए किया, तो रो काय को रहे हो, इतना जो किया, I mean you contributed, that's your care. But why are you so irritated? Why are you so much in pain because of the care? केयर देने वाला व्यक्ति तो बहुत खुश होना चाहिए, यहां तो उल्टा है. After so much of contributing to the child's life, the parent is really in stress. So what we need to understand is, we need to understand certain eternal truth. Once we have that awareness of the realization of the truth, I believe very strongly, with the heavy spiritual background that I come from, believe me, your life as a parent will be so smooth, so easy, so beautiful. If I ask you a question, and if possible you give an answer to yourself, and if you can share it with me, I'll be very happy. My first question, why did you wanted to have a child? Just because the whole world goes for a child? Just because the society forces you for a child? You wanted, but why? जब मैं ये पूछता हूं तो कुछ लोग कहते हैं सर गलती हो गई, अब क्या करें वो बताओ. अब हो गया, सब क्या करें? I mean, don't take us back to those times wherein, friends, it's not a mistake to give birth to a child. The problem is the way you hold the whole concept of parenting is a struggle.
Is parenting a struggle? Is it a challenge? Is it a problem? Is it too much of effort? So, primarily, there are a lot of myths which we need to have clarity about. So, the first one, before I start, I want to share, I'll just show you two slides of my presentation. And why I would share it with you? Because I want you to listen to it and at the same time read it. So I'll just take two slides, and this is not written by me. This is, everyone can read? Okay, I'll read it for you also, friend. The first basic premise of today's discussion, or the entire building block of good parenting, stands with this beautiful statement. I don't know whether it will be pretty difficult for you to accept it, but it goes like this: your children are not your children. The moment you have a heavy background of that basis of the attachment, mera bacha, my child, mera khoon, mera, the very statement itself is giving you a lot of stress. And most of the parent, they want to live another life through the child. You want to, get it done through him of whatever you missed in life. And you are expecting a little toddler to do it. If you have so much of wanting from someone, but get it done from your husband. वो बोलेगा चुप रहना, तेरे को जो करना तू कर, मैं अपना life जीऊंगा. Oh God, a little one cannot respond to you so directly and so bluntly. So bichara, he undergoes the pain. And we as parents, we don't understand that your child is not your child. It is a privilege given to a man and a woman to give a body to life, for they are the sons and daughters of lives belonging for itself. The moment you disregard this fundamental reality and bring in a very falsehood, a very false reality, that my child, I gave birth, I was the reason. So that takes away two beautiful, understanding. One is the physicality, the physical dimension of life. The other, at the energy level, at the vibrational level, at the spiritual level. And that's the soul. They come through you, but not from you. Both antar hai, friends. They come through you. Through you is just a passage, but not from you. It's not your creation. The moment you decide it's my creation, the entire onus of the responsibility to make his life comes onto your shoulder. And with it comes all the stress, the anxiety, the pressure. Oh God, my baby, my child, इसका जीवन मुझे बनाना है. और सिर्फ जीवन बनाना नहीं है, इसको famous बनाना है, इसको successful बनाना है. And the success and famous stems from your ego. I mean, with due respect. And generally parents don't agree. But the reality is this. So, they come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. And I will share what does this mean. What is that what you can contribute, and what is it that what you cannot, but you still struggle doing everything what you cannot. And that's where, the whole problem of parenting lies. You may give them your love, but not your thought. And that's where your thought means you're trying to control the destiny of the child. You decide what the child should do. You would decide what he should do, she should not do. Disciplining a child is okay, but deciding for the child is not pretty okay. For they have their own thought, and that's where life comes into picture. But then we have complete disregard for they having their own thought. अरे इसको क्या पता,
ये तो छोटा है, गलत करता है, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, मुझको सब पता है. Look at the ego. Look at the right. You feel that you are right. But it's actually, when you look at from that the holistic perspective of, you know, the eternal consciousness of what the reality is, believe me, friends, it's sheer disregard for life. Absolutely disregard. And you're disregarding a life, but we don't understand that. You may house their body, but not their souls. And when this takes away from their souls, you are trying to even subjugate the soul, control the soul. And that's where rebellion comes into picture. That's where, you know, the children would disregard you. And they may not disregard at the childhood days. दे विल रिसेंट दैट, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो छोटा है. और जिस दिन उसको अपनी आइडेंटिटी का भान होता है, वो आपको दो सुना के जाएगा. उस दिन मम्मी और रोती है, सर कितना किया इसके लिए, और ये उल्टा मुझे सुना रहे, इसके संस्कार ठीक नहीं, आज मीडिया ठीक नहीं, आज इंटरनेट ठीक नहीं, आज टीचर्स ठीक नहीं है. इनकी उम्र में हमने कभी अपने माता पिता को नहीं बोला. आपके माता पिता ने कभी आपको दबाया नहीं. I mean, I'll share my experiences with that. For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit. Oh my God, this is interesting. Not even in your wildest dream, simple, good, normal dream to chhod dijiye, in your wildest dream also you cannot visit. Okay, I'll just wait here and maybe ask this particular question. A hypothetical scenario, and I want you to respond to it, friends. Say, for example, for the next 2 minutes, I am your child, and you are my parents, you are my mom, you are my dad, okay? And you come to know, the mom comes to know, the dad calls the mom and tells her, sorry, son Gireesh has met with an accident. Bete Gireesh ka accident ho gaya. My first question, how would the mom feel? मम्मा कैसे फील करेगी? हेलो? Good, bad, she'll cry, she'll feel miserable, she will feel full of grief, sorrow, or good, peace, happy, relaxed, easy, stable. Hello? Definitely she will cry. He knows more about she. ठीक है ना? That's interesting. Because a father told, or maybe a husband spoke about the wife. Can I ask you a question? Why would a mother feel sad? I have no problem with the child meeting with an accident. I have no problem with the mother. I have a problem with the grief. Brahma Kumari's life, psychologist, God, and all the endeavors of human existence is peace, is love, is happiness. So I have absolute problem with grief and sadness. So my question is, माँ को क्यों बुरा लगेगा, माँ क्यों दुखी होगी ये समाचार सुनकर कि बेटा गिरीश का एक्सीडेंट हो गया? प्लीज गो एहेड. हाँ जी? बिकॉज अटैचमेंट. दिस इज इंटरेस्टिंग. तो अटैचमेंट छोड़ दीजिए सर. आपको किसी ने शादी करते हुए, बच्चा पैदा करते हुए बोला क्या अटैचमेंट का इंजेक्शन लीजिए, द वायरस विल गो अराउंड योर बॉडी? मत रखिए अटैचमेंट. हाँ जी? इमोशंस. बिकॉज ऑफ द पेन. मम्मी इज एक्सपीरियंसिंग पेन. अच्छा. हाँ जी? ओ क्या बात है. लुक एट हिज unlimited understanding of the life, because he is a human being. सर वो being समझ जाते थे तो ये सब करने की जरूरत नहीं होता था. पता है हमको क्यों दुख होगा? क्योंकि मेरा बच्चा है, my child. अच्छा, कोई दूसरे का चाइल्ड होता तो खुश होते थे क्या? वो भी नहीं. किसी का भी एक्सीडेंट सुनेंगे तो मनुष्य तो दुखी होगा. हाँ जी? Can you be a bit louder? हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग. किसी और के बच्चे को अगर
एक्सीडेंट हुआ तो इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, बट अपना होगा तो थोड़ा ज़्यादा दुख होगा. एनीवे, मुझे याद आता है, I'll share my experience. On March 8, International Women's Day, I was doing a program in BKC, Bandra Kurla Complex in Mumbai. I mean, it's a corporate houses are there, and we were doing a program. So they had an auditorium like this, and they had invited all the women from various organizations, and they had asked me to take a session for them. So I asked the same question. Unlike this audience, there were all ladies there. तो मैंने बहुत कुरेद के पूछा, दुखी क्यों होंगे, दुखी क्यों होंगे, दुखी क्यों? They kept on giving me answers. दुखी क्यों होंगे, दुखी क्यों होंगे? And finally, there was one mother. What she spoke, oh God, then I had no answer. Then I had to shut my mouth. I said, Madam, छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं. And that answer was, I don't know, you please judge it how the answer was. मैंने कहा, माँ को बच्चे का एक्सीडेंट का समाचार सुन के दुख क्यों होगा? मेरा इशू वॉज विद द दुख. So this lady finally, they gave lot of answers. Attachment, मेरा है, ये है, वो है, फला माँ हूँ, फलाना जो भी है. And finally, when this lady spoke, I said, okay, fine. Now I can't go further. And you know what this lady spoke to me? पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, गिरीश जी मैं जवाब देती हूँ. मैंने कहा बताइए. उन्होंने कहा, जिस दिन तू माँ बनेगी ना, उस दिन तेरे को समझ में आएगा. मैंने कहा हो गया भैया, बस अब दुखी होने के लिए माँ बनना बचा है, वैसे ही कोई दुख की कमी नहीं है यहाँ. कैन यू अंडरस्टैंड द थॉट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम? मतलब माँ बनो मतलब दुखी होना जरूरी है. कौन सी किताब में लिखा है माँ बनिए और दुखी हो? मुझे माँ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दुख से प्रॉब्लम है. मुझे आपके बच्चे से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके वो स्ट्रेस से प्रॉब्लम है दैट यू कांट हैंडल द चाइल्ड. For any job, you should be properly trained. 4 years of engineering, 4 years of MBBS, 2 years of a PG program, and then maybe another 2, 3, 4, 5 years of a research work. Only then you get a title, DR, Doctor of Philosophy of XYZ topic. माता पिता ऐसे ही बन जाओ, मन किया बन जाओ, खत्म. My God, no preparation, no understanding, and you are playing with life. And what is happening is, it is making my life miserable. And I am under stress. And you will be lucky enough if your child, follows all your dictates. And comes, if they doesn't, then there is a problem. Okay, so coming back to the point, चलो माँ दुखी होंगी, मान लिया, hypothetically मान लिया, but it is not the right objective of life. अच्छा, बच्चे क्यों पैदा किए थे? खुशी के लिए. शादी क्यों किया? खुशी के लिए. नौकरी क्यों कर रहे? खुशी के लिए. पैसा क्यों कमा रहे? खुशी के लिए. घर क्यों बना रहे? खुशी के लिए. On similar lines, I want to go the family way. I want my child. You went ahead. But then what is the amount of खुशी in that? It's all temporary. And then you are more stressed. अब क्या होगा इसका? अब क्या करेगा ये? अब क्या हम करें इसके लिए? Oh my God. So fine. So the mother rushes to the hospital only to know the child Gireesh has met with severe accident and he is into the operation theater. The doctors are working on him, and after a massive operation, his entire left leg was crushed into pieces, multiple fractures. After 2-3 hours of major surgery, he's brought to the ward or the room. And the mother sees the child, Gireesh, being brought in the stretcher. Nut, bolt, rod, steel, everything. Oh God, ये देखते ही साथ माँ को चक्कर आ जाता है. उत्तराखंड का बाढ़, केरला का बाढ़, हर प्रकार का क्लाउड बस्ट हो जाता है, and she can't even withstand seeing the child. Anyway, 2-4 घंटे के बाद बेटे गिरीश का एनेस्थेटिक इफेक्ट खत्म होता है. ऑपरेशन के बाद अब तो रियल पेन शुरू होगा. Oh, I can't handle the pain. So I have request to all the moms and all the dads here who are sitting here, please respond in a yes or a no. And if you can respond with the reality, and if that reality can sink into your consciousness, believe me friends, you will start appreciating this. And once you start appreciating it,
you will start living that way without stress. So I can't handle my pain. The mom, dad, brother, sister, brother's wife, 4, 5 people surrounding me. And I tell mom, I want an answer. And I tell mom, I can't bear the pain. मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ ये दर्द. Please take away 10% of my pain. Papa, you take 10%. Bhaiya, you take 10%. Bhabhi, you take 10%. Little brother, you take 10%. 50% you handle, remaining 50 I'll manage. नहीं सहन हो रहा है मम्मा. Possible or not? हाँ जी? Very clear on that? Can I ask you a question? डैडी पापा टोल्ड मम्मी दुखी होगी. आपके दुखी होने से मुझे क्या फायदा, ये बताइए. आपके रोने से, गिड़गिड़ाने से, चिल्लाने से, घबराने से, इरिटेट होने से, हेल्पलेस होने से, होपलेस होने से, हाउ गुड इज दैट टू सन डॉटर गिरीश? आप रो रहे हो ना, मुझे क्या फायदा? और आपने तो जिंदगी भर इस प्लेटफॉर्म में खड़ा किया और दुनिया को ढिंडोरा पीट के बताया, माई लाइफ इज फॉर द चाइल्ड, एवरीथिंग इज फॉर द चाइल्ड. आप इतने अच्छे मॉम हो ना, इतने सैक्रिफाइसिंग मॉम हो ना, तो फिर रो क्यों रहे हो? आपके रोने से तो मेरा दर्द कम होता तो ज्यादा रो लेते. हेलो, आपके रोने से, परेशान होने से, चिंता करने से बच्चे का क्या होगा? इंजीनियर बनेगा, 10th पास होगा, डॉक्टर बनेगा, स्पोर्ट्स चैंपियन बनेगा, नहीं बनेगा, ये चिंता करने से मेरा क्या फायदा? उल्टा बताऊं, द रियलिटी ऑफ लाइफ. एक तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ये दर्द सहन कर रहा हूं, ऊपर से मम्मी की आंखों में आंसू, पापा का क्या बोलते चेहरा उतरा हुआ है, ये देखकर मेरा यहां पर और ज्यादा पेन होगा. डू यू थिंक विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट माय हीलिंग will be fast or delayed? Now tell me friends, how good you are a mother and a father. Sorry, I'm hitting you very directly. मुझे प्रॉब्लम आपसे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उस बच्चे से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम एक्सीडेंट से नहीं है, क्योंकि संसार का कोई भी बच्चा गारंटी करके नहीं आता है कि मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा. आई मीन दैट्स व्हाट लाइफ इज. मुझे प्रॉब्लम आपके दुख से, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इन कंट्रोल. You know, when we speak about all these things, parent, you know, they say, Gireesh, you are not a good person, you are not a sensible individual. I said, why? वो कहते हैं, on one hand you say, Gireesh tells parents, you are responsible for your child's behavior. बच्चा उस स्कूल में कुछ ऊपर नीचे करेगा, टीचर सबसे पहले पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको लेके लेफ्ट राइट सेंटर कर देगी. कैसे माता पिता हैं, आप ध्यान नहीं देखते हैं. आपके बच्चे का संपूर्ण जिम्मेवारी, वो गलत करता है, वो चोरी करता है, वो बच्चे के साथ मारपीट करता है, संपूर्ण जिम्मेवारी मम्मी पापा की है. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड्स बिहेवियर, करेक्ट? ऑन सेकेंड हैंड आई वेरी कन्वीनियंटली से नथिंग इज इन योर कंट्रोल बिकॉज ही डजंट बिलोंग टू यू. अरे भैया टकलू गिरीश, करें तो क्या करें? एक तरफ बोलता है तू रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी तरफ बोलता है तेरे को कोई कंट्रोल ही नहीं है. अरे तो करें तो क्या करें? हेलो, योर अंडरस्टैंडिंग? Now this is ignorance to its highest level. So on one hand, I feel I am responsible. Second, I can't control. ये combination is so deadly. It makes me thoroughly helpless and hopeless. And I don't know what I'm supposed to do. So the reality is, बहुत ध्यान से सुनना. I don't know whether, I mean, if you can accept it, believe me, this could be the greatest good that you can do to the little one. You cannot make the destiny of the child. The child has already come with a destiny, for it has just come through you, for it belongs to life, and for their souls dwell in the house of tomorrow, and which you cannot even visit. Forget about even in the dreams. मैन्युफैक्चरिंग द चाइल्ड्स भविष्य तो बहुत दूर की बात है. अब प्रश्न उठता है कि आप कर क्या सकते हो फिर? इफ नथिंग इज इन योर कंट्रोल, व्हाट इज इट दैट इज इन कंट्रोल? एंड दैट्स वेयर स्पिरिचुअलिटी, you know, comes very heavily with beautiful options and solace. You cannot be as helpless as Gireesh is sounding to be. Nah, you can be in complete control.
पता है मम्मी पापा क्या कर सकते हैं? And this formula is very, very powerful. And it goes like this, friends. If you do not do what you cannot do, it is perfectly fine. इवन भगवान भी आपको कटघरे में खड़ा करके सिनर का टाइटल देकर आपको पापी घोषित नहीं करेगा कि बच्चे को तो पैदा कर दिया लेकिन संभालने नहीं आता, एज वॉट एवरी अदर पर्सन वुड कीप कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू. ही विल नॉट. इफ यू डू नॉट डू वॉट यू कैनॉट डू, इट इज परफेक्टली फाइन. अगर आप वो नहीं करते हैं जो नहीं कर सकते, आप मेरा दर्द नहीं ले सकते. आप पत्नी हो, पति हो, मां हो, बाप हो, सास हो, ससुर हो, फ्रेंड हो, एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू बॉडीज, transfer is not possible. I have not made this formula, friends. That's how it is. That's what the design is. That's what the reality is. You call it nature, you call it God's creation. मैं ब्रह्मा कुमारीज ने नहीं बनाया ये फॉर्मूला. I just know it, I accept it, I understand it, and I completely follow it. This makes my life as a father, as a mother, as a teacher, as a coach, when I'm handling a life and I want him to dwell in the house of tomorrow, do the best, live life to its fullest, it would be pretty easy. Otherwise, I'm trying to only control. ये मत कर, ऐसे नहीं कर, जैसे नहीं कर, वो हमारी इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं. And in case the child doesn't do it, it will really shatter you. You will be in pain. So if you do not do what you cannot do, it's perfectly fine. But if you do not do what you can do, then it amounts to sinning. अगर आप वो नहीं करते हो जो कर सकते हो, रोना या मुस्कुराना ये आपके हाथ में है. Yes or no? What you can control is the environment you are creating, is the kind of emotion, is the kind of surrounding you create around your child. That is in your control. But what he does with that environment, it's not in your control. आप अपने बच्चे को IITian नहीं बना सकते. I'm giving you a very plain, simple, specific example. आप अपने बच्चे को एक वातावरण दे सकते हो, उस वातावरण में वो बच्चा IITian बनने के लिए आसान हो जाए. You can only help your child reach his destiny where he dwells in the house of tomorrow. Can you create that environment? So typically with that example, you know what the mother can do? The mother can smile. She is in control. There is an external event. My life, my child is in pain, met with an accident, but she has complete control of her emotion. And in the whole process, the behavior of the child also increases, improves, magnifies, becomes divine. Because the child is understanding, few realities through the mother's behavior. और माँ कहती है मुस्कुरा के, तू बच गया ना. मैं 2 लाख की मेरी गाड़ी कबाड़ खाने में जाने वाली है. शराब पी के, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके शराब पी के गाड़ी चला रहा था. ओ आई एम इन गिल्ट, आई एम फीलिंग बैड. पप्पा का 2 लाख का गाड़ी खराब कर दिया, ऊपर से 2 लाख सर्जरी, 10 दिन और रहने वाला हूं. 4 lakhs in 2 hours पानी के नीचे. और डैड मुस्कुरा कर कंधे पे हाथ रख के कहता है, हमने भी गलती की थी यार, चलता है, 4 लाख ऐसे कमा लेंगे. माय गॉड, सलमान खान मेरे घर में ही है. झांसी की रानी, मदर टेरेसा, ओ दुर्गा, काली, सरस्वती, इन माय मॉम आई कैन सी द एम्बॉडीमेंट. This is what you can do. Guaranteed, friends. If you can create that right environment when it is so heavy, I am fearing, पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, मम्मी. इसके विपरीत, exactly contrast to this. If I see the mother crying helplessly, papa in stress, पता है शायद मेरे मन में आएगा, इनको बाहर लेकर जाओ यार. नहीं, एक तो ये सहन करो और इनको भी हैंडल करो. आप ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल, एक्सपीरियंस, या बेटा गिरीश ज्यादा शक्तिशाली और मोर पावरफुल? Can you become a very sweet incense stick, खुशबूदार अगरबत्ती?
We should understand our limitation. What is it that what I can control? What is it that which is beyond? And I just have to leave it. Life is so wonderful. It will take care of it. You don't have to take extra burden of the stress of making someone's destiny. So it's all about controlling yourself and creating the right environment. और अगर आपके बच्चे के, मेरे बच्चे के भाग्य में दर्द लिखा है, let him go through that experience. But because of your support, because of the right understanding, because of your right parenting, आपका बच्चा उस दर्द को भी आसानी से पार करे, अपने भाग्य को आसानी से प्राप्त करे. ये दोनों में आपका contribution is just the right environment. Hello? You're understanding what I'm trying to say? But it requires that awareness of this beautiful reality. And you know, friends, when I got across to this, it's a quote written by Khalil Gibran. I was so happy because I lived that life. I was a teacher in Mumbai. And I was so happy because I could resonate each and every statement. मैं अपने स्टूडेंट को कहता था, तुमको मैं कितना भी गाली दे दूं, कितना भी पनिश कर लो, कितना भी चिल्ला दूं, तेरे भाग्य में जो होने वाला वो होगा. Can I be an aid for you to reach your destiny? चिल्ला के कहाँ डेस्टिनी तुम प्राप्त करोगे? ऊपर से मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है, मैं नेगेटिव इमोशंस में आ रहा हूं. The teacher and the student relationship is strained. I enjoyed every moment of me being a teacher for almost 10 years. You go to my Facebook account, although I don't sit on it now, you know, it has become a fan page. आप है ना उसमें पूछना, have you ever seen Professor Gireesh getting angry? You will get an answer in absolute capital no. मैं क्यों गुस्सा करूं? Gussa is your choice. And what you are doing is you're creating a negative energy around. You're not inspirational. You're not motivational. You are not allowing him options to overcome the challenges. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. अब यहां पर आपको फिर कंट्रोल हो जाता है. You are living another life through the child. And in today's world, every parent wants the child to be famous. My dear friends, Ramesh brother is sitting here. You know, he is a Dronacharya awardee with Indian athletics team. Number of failures is more than number of successes in planet Earth. Yes or no? Lakhs of people write the IIT exam, only 60 get through IIT Mumbai, 60 gets through IIT Delhi, 60 chosen ones. So instead of helping them with success, can we sensitize them for failures? And failures तो हमारे गले से नीचे नहीं उतर सकते. Can you set the right expectation? And you know, I was reading one paper, research paper, educational psychologist wrote, those parents, those people who create high expectation, they have found better results, but star conditions apply. Your expectations has to be realistic. And it's a responsibility of the coach, the teacher who has set the expectation, the parent who has set the expectation, to give the right support. और हमारा support उसको कमरा दे दिया, हमारा सपोर्ट उसको कंप्यूटर दे दिया, हमारा सपोर्ट हमने उसको एकेडमी में भर्ती करा दिया. Oh, and they don't need that. Yeah, at the physical level, yes, the right facilities, but at the emotional level. So, say for example, I was quoting it yesterday. Say for example, आपका बच्चे ने एग्जाम लिखा, उसका रिजल्ट नेगेटिव में आया. Maybe he flunked, maybe he lost the game, maybe he couldn't clear the exam, maybe he did not get a job, maybe he couldn't clear the UPSC final exams. Question, friends, what's your support? ऊपर से तो शायद बोल देगा, कोई बात नहीं बेटा, एक बार ट्राई कर लेना. आपका चेहरा तो देखो, बोलेगा पप्पा सब समझ में आ रहा है, दुखी हो गए हो आप. सॉरी हैं, आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं पेरेंट्स, आप तो ऐसे सब करते ही नहीं. You know, I was talking to an 8th standard students in North India. मैंने कहा आपको एग्जाम्स का डर लगता है? बच्चों ने कहा हाँ. मैंने कहा क्यों? बोला फेल हो जाएंगे. मैंने कहा फेल हो जाओगे तो क्या होगा? बोला सर प्रॉब्लम फेल का नहीं है, मम्मी पापा क्या बोलेंगे. Oh God, someone could relate to that.
सारा चक्कर मम्मी पापा का है। मैंने कहा तुम्हारे मम्मी पापा को मैं हैंडल कर लेता हूं, वो तुमको डांटेंगे नहीं, वो तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, वो तुमको इंसल्ट नहीं करेंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे विल बी जस्ट लाइक अ वेरी वंडरफुल सूदिंग ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स। तो पता है बच्चों ने क्या कहा? सर तब तो एग्जाम लिखने का मजा आएगा। हो गया ना काम। आज बच्चा एग्जाम लिखने का मजा ही नहीं ढूंढ रहा, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ बर्डन। What will people think? What will people think? What will, and who has set in? I'll come to that also, friends. For life goes not backward, not gets delayed. Tarries means delayed with yesterday. हो गया ना। हमारे जमाने में, हमारे जमाने में, हमारे जमाने में तो पिछली बार भी ऐसे ही किया था, ठीक नहीं पढ़ाई किया था, कितना हमने तेरे लिए खर्चा किया। ये सब है ना, बहुत बहुत मैसिवली बच्चे के साइकी को प्रॉब्लम करता है। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कम्स द हायर डायमेंशंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड you are the bows from which your children as living arrows are sent forth. So you know, God is saying you are the bow, and who is the arrow? Your children are the arrows. The archer, the creator, the designer, the super intelligence, the super consciousness, the archer sees the mark upon the path of the infinite. He understands the infinite, the soul, the journey, the past, the present, the future. He has absolute clarity. You and I don't have it. And that's where the whole confusion is. उसको सब पता है। उसको पता है ये आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, किसके साथ है, क्या इसका भाग्य है, क्या इसके पुराने का अच्छा कर्म है, everything. And he bends you with his might. You know, when you have to pull the string, the bow bends. So God is bending you with his might that the arrow may go swift and far. वो आपको बेंड कर रहा है ताकि उसका जो स्पीड हो ना, वो एरो का, आपका बच्चे का जो भाग्य हो ना, वो बहुत अच्छा और श्रेष्ठ हो। लेट योर बेंडिंग इन द आर्चरर्स हैंड बी फॉर ग्लैडनेस। और जहां बेंड हो रहा है, मेरे लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं इस बच्चे को लेकर, वहां हम तो रोते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं। दैट इज नथिंग टू डू विद ग्लैडनेस। For even as he loves the arrow that flies, archer, God, loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. So he loves the parent, the bow who is stable, wither away nahi ho raha hai. And once we understand this, friends, this is a quote by Khalil Gibran, and believe me, what I understand is, we don't, brother, we can switch off the presentation. What we don't understand is that these realities, we are very far away from it. We have created our own realities. Pata nahi kis, no justification to it, there is no logic to it, there is no sensibility, with due respect, and there is no sensibility to it. Just जैसे चल रहा है, जो मन में आया हम कर रहे हैं इस एक लाइफ के साथ। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। डू यू गेट एंग्री? या द चाइल्ड इज गिविंग एन अफर्मेटिव फॉर द मदर। आई एम आस्किंग अबाउट द पेरेंट्स, डू यू गेट एंग्री? या वाई? अच्छा चलो छोड़ो। इज एंगर हेल्दी? वाह, ये है सेंसिबिलिटी। त्रिनाथ भाई, सब लोग कह रहे हैं एंगर इज नॉट हेल्दी, बट हम करते हैं। अब क्या आप मैसेज दे रहे हो बच्चों को? खुद को पता है एंगर इज नॉट हेल्दी, बट हम करते हैं। Yesterday I was discussing, and there was one parent said a very beautiful thing. बोला सर हेल्दी है। मैंने कहा क्यों? बोला गुस्सा करो, टेंशन निकालो, बी हैप्पी, and when I am happy I'll make the whole family happy. मैंने कहा प्रोसेस तो बड़ा वंडरफुल है यार आपका। अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो दूसरे के ऊपर, मैं खुश तो सारा जग खुश।
मैंने कहा ये बड़ी सैडिस्टिक अप्रोच है आपका परिवार को खुश करने का। अच्छा, व्हाट हैपेंस फॉर द रिसीवर, जो बेचारा गुस्से को झेल रहा है उसका क्या कंडीशन है? सी, यू गो एंड आस्क एनी मेडिकल डॉक्टर, मेडिकली एंगर इज नॉट हेल्दी, बट वी आर सो हेल्पलेस दैट विदाउट एंगर ये बच्चों को कंट्रोल करना। और कुछ माता पिता तो सोच रहे हैं, सर जी आप इतना जो लंबा चौड़ा फेंक रहे हो, हमारे घर आ जाओ, हमारे बच्चे को आधा दिन बिना गुस्सा किए करके हैंडल करके दिखा दो प्रैक्टिकली। थियोरी तो बड़ा अच्छा बोल रहे हो, हमको पता है कितना डिफिकल्ट है इन बच्चों को संभालना। So anger is not healthy. But then the option is, do we believe that with peace, with stability, I can handle the child, reach his destiny, create the right environment? So I'll give you a few examples, friends. ठीक है? I remember, I don't know whether you have heard this before or not, and in case you have heard it, I want you to, reinforce this. What we need to understand is the definition of life, and it becomes very important because we all want to make our life good. Yes, but then the question is, what is life? So if I ask you a question, is your life good? Hello? Is your life good? So those who think my life is good, raise your hand. क्या बात है, पब्लिक में तो सबसे अच्छा आपका ही लाइफ है। सोशल मीडिया देख लो तो लगता है दुनिया में स्वर्ग अभी ही है। क्या डीपीज है, क्या पोस्ट्स है, क्या पॉजिटिव थॉट्स है, और सारी दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है। इससे सुंदर दुनिया तो हो ही नहीं सकती है सोशल मीडिया के अनुसार। और पब्लिक में तो हमारा सबसे अच्छा ही होगा क्योंकि सारी दुनिया देख रही है। और कभी कभी जब हम पब्लिक में हाथ ऊपर उठाते हैं ना तो वाइफ बोलती, कहाँ तुम्हारा लाइफ गुड है, मेरे को सब पता है, झूठ बोलते हो। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तो मुंबई के माता पिता के बारे में बात कर रहा हूँ। हैदराबाद माता पिता और Khalil Gibran, every quote you practice and you live that life. Anyway, in one of the audience I asked, if your life is good, please raise your hand. फिर मैंने पूछा, how is your life good? So there was one person who was ready to respond to me and he said, Gireesh, 5 reasons my life is good. मैंने कहा, my God, मैं तो एक expect कर रहा था, आपने तो 5 बता दिया. Please say. My dear audience, I want you to relate to that 5 reasons, ठीक है? And then tell me whether you resonate with that 5 reasons. तो मैंने उनको पूछा, how is your life good? He said, Mr. Gireesh, my life is good because my wife is good. Yeah. All those husbands who are smiling, I can understand how big a victim you are of this statement. I mean, with due respect. Sir, कहाँ पे good? चलो छोड़ो. He said my life is good because my wife is good. Number 2, he said my life is good because my children good. And when he said, everyone looked at him. And then he further explained, मेरे बच्चे सुबह अपने आप उठ जाते हैं, खुद तैयार हो जाते हैं, खुद नहा धो लेते, खुद खाना खा लेते, खुद तैयार होके स्कूल चले जाते, खुद अपना बैग सेट कर लेते, खुद स्कूल से आकर के हाथ पैर मुंह धो के खाना खा के होमवर्क करके सोकर फिर टीवी देखते। जब वो कह रहे थे ना, पूरा बाकी ऑडियंस उनको, और एक ने तो पूछ भी लिया, भैया ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हैं? हाउ डू यू प्रोड्यूस वन व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग? So he said secret. I will not say. I mean, he didn't reveal also. Oh, life becomes absolutely wonderful. अब kid अपने आप सब कुछ. Third reason, he said my life is good because financially I am good. Financial health is good. Emergency, exigency, I need not, run after money. Fixed deposit, insurance, bank balance, gold, investment, property. सब जगह मैंने करके रखा है. I mean, any emergency I can handle it. Fourth, he said my life is good because the health of my family members, near and dear ones, good. हम छोटा सर्दी खांसी होता है, but no major illness, heart attack, diabetes, blood pressure, mental illness, depression, nothing of that sort. Life is good. And the fifth one, he said my life is good because my boss is good. Yeah, I mean, it could be a mother-in-law boss, it could be a real boss in your corporate world. I mean, ठीक है, boss अच्छा है तो सब अच्छा है.
एंड आई थिंक हमारा भी आंसर यही होता अगर लाइफ गुड है, मतलब ये सब फैक्टर्स। मैंने वो सर को एक प्रश्न पूछा, आई लास्ट यू ऑल्सो, मैंने उनको पूछा सर यही सब जानकारी प्राप्त करनी होती तो वेरी स्पेसिफिकली आई वुड हैव आस्क्ड प्लीज टेल मी अबाउट योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, योर जॉब, योर फिनेंसेस, द हेल्थ। दैट वाज नॉट व्हाट माय क्वेश्चन वाज। व्हाट वाज माय क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन क्या था? हेलो, व्हाट वाज माय क्वेश्चन? हाउ इज लाइफ? आई एम आस्किंग यू अबाउट लाइफ, यू आर स्पीकिंग अबाउट योर वाइफ, about children, about finances, about boss, about health. You know what he said? बोला यही तो लाइफ है। मैंने कहा सर जी अगर यही लाइफ है तो आपकी लाइफ तो इनके हाथ में है। योर लाइफ शुड बी योर चॉइस, योर प्रोरोगेटिव, योर डिसीजन, और सम डिपेंड्स ऑन समबडी एल्स। हेलो, योर लाइफ योर्स और समवन एल्सेस? हेलो, प्लीज टेल मी। My life, my choice, right? My independent decision, right? Or it depends on someone else. हाँ जी? Still? So you know what he asked me? Then he asked me, अगर ये सब life नहीं है तो what is life? She's laughing at her, foolishness. शादी तो कर लिया, बच्चे भी पैदा कर लिया, आज समझ में आ रहा है यार कुछ समझ ही नहीं आया था, हमने कर तो बहुत कुछ। With due respect, what is life? Hello, I'll tell you my definition of life, and here comes heavily the wrong parenting. ठीक है? So when I was in the second standard, I'll start with that little age group. So when I was in the second standard, my 500 GB hard disk was empty. And the problem is, my mom right click, open a new file and a new folder, and I started understanding and making definitions of life. And I was not a good studious student. Now, good studious students means, जैसे मम्मी चाहती थी वैसे मैं बैठ के नहीं पढ़ता था, और हमारे मम्मी लोगों को बैठ के पढ़ने वाला बच्चा अच्छा लगता है। बॉयज जनरली बैठ के नहीं पढ़ते थे, मैं तो खेलते कूदते खाते पीते थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड। And उस समय when I was in the second standard, 6 years of age, my enemy number one, दुश्मन number one was my elder sister, क्योंकि वो बैठ के पढ़ती थी और उसके कारण सबसे ज्यादा डांट मुझे खाना पड़ता था। और मम्मी का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, दीदी को देख, दीदी को देख, दीदी को देख। मैंने मन में सोचा भगवान क्या देर है अंधेर नहीं, एक दिन तो इनको देख ही लूंगा। अरे यार तुम पढ़ रहे हो तो मैं डांट क्यों खाऊं? और मैं तो कभी कभी दीदी को जाके बोल भी देता था, दीदी तुम भी थोड़ा मस्ती करो ना, तुम भी थोड़ा घूमो घामो ना, तुम भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा ना यार, तुम्हारे कारण मम्मी सबसे ज्यादा बैशिंग्स मुझे दे रही है। चलो छोड़ो। एंड आई स्टिल डिड नॉट फॉलो व्हाट मम्मा आस्क्ड मी टू डू, एंड माय एग्जाम डेट्स केम वेरी क्लोज। ओ मेरा मम्मी का जो स्ट्रेस लेवल्स एट टच द हाईएस्ट पॉइंट। शी वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड। अरे एग्जाम और ये मस्ती कर रहा है। आउट ऑफ sheer frustration, tournament, exam, and it could be anything, just relate to it. और जैसे एग्जाम के डेट्स केम क्लोज, मम्मी आउट ऑफ sheer frustration, you know what she asked me? तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? How much marks you will get? And क्योंकि my 500 GB was empty, I evokingly responded very plainly, very relaxed. मैंने मम्मी ने पूछा कितना मार्क्स मिलेगा? मैंने कहा कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 15, 1 डजन, 2 डजन, आई एम परफेक्टली फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट आई सेड कितना भी चलेगा, वो शी लॉस्ट इट। शी हैड मैसिव कार्डियक चेस्ट अरेस्ट, किडनी अटैक, लिवर अटैक, फुल स्पाइन अटैक, फुल बॉडी अटैक। शी कुडंट स्टैंड प्रॉपर्ली। उस समय पर सबसे ज्यादा प्यार एक बेटा किसी इंसान से कर सकता है तो वो मम्मी से ही करता है। हमको तो किसी से प्यार का मतलब ही नहीं है। And I realized she is in pain and agony because of me. Oh God. And I immediately changed my statement so that she can be more comfortable. मम्मी ने पूछा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? मैंने कहा कितना भी चलेगा। Oh, she was in panic attack. मैंने तुरंत आंसर चेंज कर लिया। मैंने कहा तेरे को कितना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनना। और हमको लगता दिस इज गुड पेरेंटिंग,
और पता ही नहीं है, sheer ignorance is leading to misery for the child's life. मैंने कहा तेरे को कितना चाहिए? एंड शी लाइक अ टिपिकल इंडियन मदर, पता उन्होंने क्या किया? 100 में 100, आई मीन 75-80 बोलते तो फिर भी ठीक था, फुल 100 में 100. आई मीन टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी. आई मीन शी वांटेड 100 आउट ऑफ 100. मैंने जितना हो सकता था पढ़ाई किया, एफर्ट किया, सिंसियरिटी नॉट सिंसियरिटी, मस्ती वस्ती कर कर बड़े रिलैक्स्ड होकर एग्जाम भी लिख दिया. स्पेंड माई टाइम ऑल्सो, वेटेड फॉर द रिजल्ट ऑल्सो, एंड द डी डे केम. एंड उस जमाने में हमको रिपोर्ट कार्ड फिजिकली दिया जाता था क्लासरूम में. एंड द टीचर अनाउंस, मास्टर गिरीश टेक योर रिपोर्ट कार्ड. ओ वेरी रिलैक्स्ड लाइफ. और आप होते थे तो दिल बाहर आ जाता था, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा. और छोटू का तो 500 GB खाली था. मैं मैडम के पास मुस्कुराते हुए गया तो मैडम ने रिपोर्ट कार्ड खोलकर मैडम ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस गिरीश, कीप इट अप. I did not realize what I have to keep it up, but I kept the report card in the bag. ठीक है, अब क्या रखना है, नीचे क्या रखना पता ही नहीं चला, because I was not relating it to the marks, and for her keep it up was marks, and I couldn't relate to that marks. For me life was everything, not the marks. Good marks, good life, bad marks, bad, good then bad का कोई strings नहीं था, dependency नहीं था, bondages नहीं था, बंधन नहीं था. It was free. I lived a free life. Can you live a free life? इतना कुछ होके भी bondage, 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 बंधन युक्त जीवन. Anyway, I kept the report card into the bag. फिर खेला खाला, पसीना पसीना, थक हार करके I reached home, knocked at the door. Oh, my mother broke the Olympic record, Ramesh sir, of high jump, of triple jump, of pole vault, of long jump, nanosecond. She reached on the door, opened the door. 1 सेकंड में वो पहुंच गई क्योंकि उनका पूरा आधार मार्क्स था. एंड शी आस्क्ड मी, रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? मैंने कहा बैग में रखा, ले लो. हमको तो मतलब ही नहीं था, उनको ही था. ओ शी पाउंस्ड ऑन द बैग, अनजिप्ड द बैग, टुक द रिपोर्ट कार्ड. उनका दिल धड़क रहा था. शी ओपन द रिपोर्ट कार्ड. ओ शी हैड ट्विंकल इन हर आईज, स्माइल ऑन हर फेस, एंड आई वाज वाचिंग इट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माय आईज. पता है व्हाई शी वाज हैप्पी? 75% मार्क्स मिले. She was thinking कि this guy would flunk, नालायक फेल हो जाएगा, इसके पढ़ाई से तो लग रहा था. 75 was more than expected. Oh, she delighted in that 75% marks. And you know what she did? I was still watching her. She took the report card, went to dad. और डैडी के पास जाकर मम्मी ने कहा, मेरा बेटा है. And I was wondering, what was your contribution? Anyway, she was basking in the glory. बच्चा पास हो, सोशल मीडिया अपडेट, सारी दुनिया को आप बताएंगे. Can I ask you a question? With the same amount of stability, the archer believes in the stability of you and he praises you. Can you still share the failures of your child? Will you feel stable and relaxed? You are creating a mindset in the child. Failure is bad, success is good. Failure is bad, success is good. Can I ask you a question? What is success? Please define success. Hello? It's such a flawed definition here. And with that flawed definition, I'm creating a flawed message to my child who for the rest of the whole life will have a flawed, image in his mind. I mean, that's the, what you call, the most sinnest part that we can do to our life. You know the definition of success? अच्छा चलो छोड़ो. Failure का definition बताइए. What is failure? चलो, we don't have time, I'll tell you. I mean, yesterday we had a beautiful interaction. Failure is not achieving what is expected. Mama's expectation, mera expectation, dunya ke expectation. That's a definition of a word called as expectation. I'm asking you the definition of failure. जैसा मैं चाहता हूं, जैसे घर वाले चाहते हैं, वो नहीं होना, आपने एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया ना, और वो नहीं प्राप्त होना माना फेलियर, वो प्राप्त हो जाना माना सफलता. Failure and success is here. It's a feeling.
It's a state of mind. And from here, I have resulted into an outside phenomena. And everything is based on is. अब मैं घबरा कर पढ़ रहा हूँ, माता पिता घबरा कर पढ़ा रहे हैं. What is the state? अभी fail हो रहा है. Every moment of the stress with which the child is playing, studying, performing, it's all pain, pain, pain and stress. Every moment the child is leading a failed life. And with that failure mindset, with that stress, his performance goes down. And it becomes a phenomena. It's a vicious circle. You and I live the same life. I'll come to the climax of the story, friend. Mummy happy, Papa happy, I am happy. They are happy with 75%. I am happy that Mummy and Papa is happy. हमको marks से लेना देना नहीं था. After half an hour, my mama barges into my room. She comes rushing into my room and gives me 2 big tight slaps. 2 झापड़ लगाती है मुझे. One on the left and one on the right. And I am completely zapped. अरे अब क्या प्रॉब्लम है यार? अब तो सब ठीक चल रहा था ना. मुझे समझ ही नहीं आया. और समझने के लिए मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिल्ली को फोन लगाया. मैंने कहा आधा घंटे में मेरे को रिपोर्ट दो भैया. मैं स्टेट एजेंसी में तो मैं बिलीव ही नहीं करता. हमने दिल्ली सीधे फोन लगाया. मैंने कहा प्लीज थरो इन्वेस्टिगेशन एंड गिव मी अ रिपोर्ट. विद इन हाफ एन आवर दे गिव मी अ 1000-page रिपोर्ट. ठीक है, कंक्लूडेड इनटू 1 line. यू नो मेरे को झापड़ क्यों पड़ा? क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला. My first definition of life, मिलना. अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एडमिशन मिलेगा, IIT में दाखिला मिलेगा, फर्स्ट रैंक मिलेगा, चैंपियनशिप मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी. Life is all about having. And it's not only with all these things, for all the ladies here, प्यार मिलेगा. कितना किया तुम्हारी मां के लिए, क्या मिला? The bahu is venting out her frustration. Everything is milna. Hello? Life is milna. मिले तो खुश, ना मिले तो दुख. And this is what we are doing with the children also. उनको हम ये programming कर रहे हैं, right click. It's all about milna, milna, milna. And you are a glorified dad if all the milna is coming easily to your child or with effort. And you're pushing your child to the limit to milna, milna. Oh, he's losing the beauty of life. What is life? Hello? Believe me, friends, the first time I came to Brahma Kumaris, I thought I know everything. I have complete control of my life. I realized I have absolute no idea what life is. I knew what marketing management is. I knew what financial management is. I knew what heat mass transfer is. But I had no idea about life. And that's what this beautiful institution is, the Brahma Kumaris. To know about life. My second definition. First is milna. 9th, 10th, 11th standard, थोड़ा maturity आया. पता है मम्मी पापा समाज ने क्या कहा मुझसे? तू बड़ा होकर क्या बनेगा? I said कुछ भी चले. Oh God, they lost it again. Engineer, doctor, chartered accountant, lawyer. The second definition is doing. And my dear wonderful parents, if your child is not able to do, then I am a failure. Then I am good for nothing. I don't exist. I will not be able to even get love. Hello? The doing part of it. In the drivenness and completely being obsessive about having and doing, we miss the third and what Khalil Gibran was mentioning, the being. Life is an experience. Experience of peace, experience of love, experience of tranquility. Hello? हम कितने stressed हैं? And it all is because of 2 things, having and doing, having and doing, having and doing. For ourselves, for others also. Please, having or doing पर बहुत focus करिए. Don't miss on to the being part. And there is a beautiful synergy. The more you focus onto the being part of these beautiful emotions, I bet you will be able to do better. Your performance increases. सारा चक्कर तो doing का ही है ना. जितना stability, जितना peace, जितना confidence,
उतना ज्यादा डूइंग गुड, जितना ज्यादा अच्छा गुड, automatically you will get. What do you want? You want your child to be a champion? To be easy, because I have such fantastic support of emotions, of peace, love, confidence, self-worth, self-respect. And if it is connected to achieving something and then self-worth increases, then self-respect increases, sorry friends, it's a very deadly combination. So can I emphasize on this part of it, the being, the be, do and get. आज उल्टा हो गया, get, do and be. अच्छे मार्क्स मिलिए, अच्छा पैसा कमाइए चाहिए, फिर उससे घूमिए, उससे शॉपिंग करिए, फिर खुश होइए. Get lot of money, do lot of shopping, then be happy. Get lot of money, do travel the whole world, then be happy. If then reward is again a flawed mental model, and we all are operating out of if then. If paisa milega, then I'll be good. If this happens, then I'll be good. If this happens, then if then reward, if then reward. Sorry friends, it doesn't work that way. This if keeps on changing, and you and I keep very royally changing it. So I'll give you one or two examples, friends. I'll take another 5 minutes, friends. Some takeaways with the limited time I had. But the basic essence is, can I focus more on the being part? You are not a mother. You are a being of peace, love, and happiness. And with that being of peace and happiness, bring in the essence of peace into motherhood. You become a peaceful mother. You become a stable mother. And that's what Khalil Gibran was mentioning. जितना आप मदर केस में आ जाएंगे, guaranteed आप स्ट्रेस में आओगे. I'll give you a hypothetical situation, friends, about anger. ठीक है? So daddy comes home late at night, completely tired to the core, and he comes home at 10 o'clock, dead tired. और जैसे ही दरवाजा खटखटाता है, the little one studying in the 5th standard, ओ इतना cute baby, वो पापा को बोलता है, पापा मेरे साथ खेलो. अब पापा बोलता है मम्मी को, तो मम्मी के साथ क्यों नहीं खेला? वो खेलती नहीं है ना. 2 मिनट खेलती है, फिर काम में लग जाती है. वो सारा दिन से पापा के लिए वेट कर रहा था, और पापा ये छोटे से बच्चे को देखकर उसका वैसी थकान थोड़ा दूर हो जाता है. ठीक है, पापा सेज ओके फाइन, क्या खेलना है? पता है छोटू क्या बोलता है? चोर पुलिस. ए माय गॉड, आजकल तो लोग फुटबॉल भी कंप्यूटर पे खेल लेते हैं, अब इसको चोर पुलिस रियल में खेलना है. डन, चोर पुलिस. पापा ने उसको पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया है. चोर कौन बनेगा? चोर कौन बनेगा? हेलो, क्या बात? पापा कह रहे पापा बनेंगे. ठीक है, पुलिस क्योंकि ग्लोरिफाइड पर्सनालिटी, पावरफुल पर्सनालिटी तो पुलिस ही है. चोर तो अच्छा कैरेक्टर भी नहीं है. पापा ने कहा चल तेरे लिए मैं चोर भी बन जाऊंगा. नाउ द छोटू वेयर्स द पुलिस का ड्रेस, द कैप, द टॉय गन, द स्टिक, द विसिल, एंड द मोमेंट ही वेयर्स दैट पुलिस का ड्रेस, oh, power comes in. His body language changes, his eyes become big, chest swells, और वो पापा, and the game starts. और वो पता है पापा को कहता है, इधर नहीं बैठने का, जानता नहीं मैं पुलिस हूं, तेरे को अंदर कर दूंगा. और जैसे ही पुलिस ऐसा बिहेव करे, पापा स्लैश चोर, नहीं 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 पुलिस अंकल मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कुछ गलती नहीं की, मैं चोर वोर नहीं हूं. जितना पापा स्लैश चोर डरे, उतना छोटू स्लैश पुलिस डराए. और इन द एंसुइंग गेम ऑफ डरना एंड डराना, इफ पापा डरता नहीं है मान लो, तो पता है छोटू क्या बोलेगा? मेरे को नहीं खेलना आपके साथ. अरे उसको मजा ही नहीं आ रहा यार, मैं डरा रहा हूं और आप तक डर ही नहीं रहे हो. मजा तो तब आएगा ना जब पापा डरेगा, और पापा डर ही रहा है. बच्चे के लिए तो जी रहे हैं, बच्चे के लिए हमने तो टॉप फ्लोर खाली कर दिया है, मतलब हो गया है, अब इतना नहीं कर सकते क्या? डरना कौन सी बड़ी बात है? और पापा डरता, जितना पापा डरे छोटू डरा है, उसको और मजा है. दैट्स द ब्यूटी, इज वेटिंग फॉर डैडी टू प्ले. एंड इन द डरना डराना रीचेस टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट. एंड यू नो द डराना बाय मिस्टेक, he shoves the dad, he pushes the dad, क्योंकि वो पुलिस है, वो कुछ भी कर सकता है. And that shoving gets converted into a big tight slap on papa's face. छोटू भी घबरा जाता है. पापा को पड़ती एक अच्छी झापड़.
मतलब डराने के प्रोसेस में, रियल में पड़ती है, बिग टाइट स्लैप, रियल में पेनफुल। आप में से कितने माता पिता ने बच्चे का झापड़ खाया है, टाइट वन, छोटेपन में? बहुत सारे ने खाया होगा, करेक्ट। ऐसे ही इसका भी खा लिया। एक क्वेश्चन, कितने पापा को गुस्सा आएगा? हाउ मेनी पापा हु हैज गॉट दैट हिट, जिसको एंगर आएगा? ओ फैंटास्टिक। My little understanding of asking people across India, more than 85% of the parents says हमको गुस्सा नहीं आएगा, पापा को गुस्सा नहीं आएगा, झापड़ खा के गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? पता है क्यों नहीं आएगा? And that's what Khalil Gibran was mentioning, and that's what the reality of life is. That's what spirituality is. That's what right knowledge is. पता है पापा को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? पापा never became a chore. 500% in his consciousness, he always believed and felt and realized that I am a dad and this is just a game. और मैं तो खेल रहा हूँ इसके साथ. He never came into the role of a chore. Your and my problem is, I realize and completely dwell in the role of a dad. You are not a dad. You became a dad. You are just playing a role of a dad. The originality is, you are a peaceful entity, a peaceful energy. We call it as soul, we call it as Atma, we call it as... That's your originality. You are operating from the positional, leadership. And जहां आपने अपने आप को डैडी मॉम समझ लिया, और डैडी और मॉम के कारण ये बच्चा मेरा नहीं सुन रहा है, मेरा नहीं मान रहा है, मैं मां हूं, गारंटीड आपको इरिटेशन, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा. बट द मोमेंट यू कैन dwell in this consciousness that I am a peaceful entity playing the role of a mother, with peace, with happiness, with love, with tremendous patience, you will be able to handle the irate child, the not disciplined child, the not obedient child, and create an environment to reach to his destiny. बॉस को गुस्सा आता है, अरे बॉस नहीं हो आप, that's your responsibility. You are a peaceful soul. The moment you bring in peace, love, happiness to your role, you will see the results. And that's what God does, friends. So I'll tell you my last example, friends. Okay? In US, Orlando, there is a there is an activity, there is a swimming pool, and in that swimming pool, they use killer whales. It's a form of a circus. And people watch that particular. It's very costly to see, like you go to a circus. And when you understand how they do that acrobatics, a killer whale, a female killer whale, a full-blown female killer whale will weigh almost around 11,000 to 13,000 pounds. And if the killer whale, crushes, your hand is in between its mouth, you will not have a hand. It's a ferocious sea creature. Versus a male killer whale will weigh almost around 17 to 18,000 pounds. इनके साथ वो ट्रेनर पानी के अंदर जाएगा, उसके नाक पे खड़ा होगा, द किलर व्हेल विल कम आउट, द ट्रेनर विल जंप हियर. It's all with music, color, very beautiful, and people throng to watch it. But now the question is, how do you train a killer whale to do all the acrobatics? How do you train your child to achieve the objectives, become a champion, but the right way? So they use 3 or 4 steps, friends. And that's the takeaway from today's session. When a killer whale, baby killer whale is brought to a trainer, when you have a baby in your life, the first thing the trainer does to that baby killer whale is to establish one thing, and in English we call it as faith, F-A-I-T-H. And what faith? For the killer whale, it is not the right habitat to stay with human beings. The killer whale is threatened. It has its habitat in under the water, the sea. So the moment it comes in contact with human beings, it fears for life. And the first thing the trainer does, the parent should do, a coach should do, is to establish faith that I will do no harm. I am with you. I am a friend. I am a well-wisher. I am a caretaker.
And to establish that faith, it takes almost around 6, 7, 8 years. 8 साल तक ट्रेनर का एक ही ऑब्जेक्टिव है, I will do no harm, I will do no harm, I will do no, I'm your friend, I'm just here. But what is the objective? Objective is हवा में एक रिंग लगाना है, उसको आग लगाना है और किलर वेल को शो में फुल ब्लोन किलर वेल को उसके बीच से कूदाना है. That's what the लक्ष्य is. Your लक्ष्य is my child, champion, successful, serene, divine, beautiful, full of inner powers. That's the लक्ष्य. और ये the first step is to create that faith and trust. 8 years goes by. अब सिर्फ फेथ तो नहीं चलेगा, आप उसको तो कूदाना है. एंड द ट्रेनर पुट्स अ रिंग इनसाइड द स्विमिंग पूल, एंड बाय द टाइम द साइन लैंग्वेज एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द ट्रेनर एंड द किलर व्हेल. द ट्रेनर इंस्ट्रक्ट्स द किलर व्हेल, गो थ्रू दैट रिंग, बट वो बाहर से जाता है. 1 बार कहता है, 2 बार कहता है, 10 बार कहता है, 1000 बार कहता है, लाख बार कहता है, बच्चे अंदर से जा, बच्चे टीवी बंद करके पढ़ ले, बच्चे थोड़ा जल्दी सो जा, बच्चे तुम जल्दी उठ जाओ, बच्चे ऐसा खाना नहीं खाते. वो बाहर से ही जाता है. अब है द कैच. किलर वेल के ट्रेनर को लाख बार बोलने पर भी और किलर वेल ना सुनने पर भी गुस्सा करने का ऑप्शन नहीं है, परेशान होने का ऑप्शन नहीं है, दुखी होने का ऑप्शन नहीं है. पता है क्यों? हेलो, if you want to be a trainer there, they will first check whether you will get angry or not. You know why? If you get angry after 8 years just because you have to get a work done, आपने 8 साल की मेहनत मिट्टी में मिला दी. 8 साल क्या किया था? To establish a faith that I will not do wrong to you. And what you are exactly doing when it comes down to certain doing, you lose your patience. So the trainer has no option. Without getting angry, can you make him do? Oh, that's where the challenge is. That's where your inner serenity, the right knowledge comes into picture. आपको चैंपियन बनाना भी है, लेकिन गुस्सा नहीं कर सकते. हम यही करते हैं. It's an unconditional, unsaid formula. प्यार तो करते हैं ना तेरे से. अरे तो करते हैं तो एक्सप्रेशन. आप 23 घंटा बच्चे से प्यार करो और 1 घंटा पिटाई करो. हेलो, 23 hours you love your child and 1 hour you hit the child mercilessly. Question, would the child respect you and love you? अरे 23 hours of love 1 घंटे में all swiped, सब पानी में. हमको यही नहीं समझ में आता है. आपने सारा दिन बच्चे के लिए काम किया, एक उसकी गलती पर आपने ऐसा भड़क दिया, ऐसा कुछ कर दिया, एवरीथिंग इज लॉस्ट. और हमारा जस्टिफिकेशन पता है क्या? कितना करते हैं सर बच्चों के लिए, बस एक ही बार गुस्सा किया ना. अरे यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स. आपको मैं 23 घंटा प्यार करूं और 1 घंटा पिटाई करूं, बताइए हाउ वुड यू फील अबाउट गिरीश? The same applies to that also. Just because I am not powerful, just because I can't handle my expectation, just because I can't detach myself, just because the doing is more important than the being, this is what we do. Second formula, patience. Patience comes when you realize, I am a peaceful soul, I am a stable soul. The more you think, the more you say, the more you affirm, you will start behaving like that. थर्ड, एक दिन गलती से किलर वेल चला जाता है, गलती से, बाय मिस्टेक. जैसे ही वो अंदर से जाता है, द ट्रेनर लव्स हिम. Trainer loving the killer whale is patting some part of his body, maybe under his fins or something like that. This is I love you. Oh, the killer whale शायद सोचता होगा, I don't know, but that's how it works. ये इतना ज्यादा मुझे आज प्यार क्यों किया? What did I do or did or behave? I got unconditional love from the trainer, and maybe that's where they drew consciously. जैसे ही वो अंदर से जाता है, I love you, I love you, I love you. इस संसार में हर प्राणी को प्यार चाहिए, इंसान तो बहुत दूर की बात है. And if they can get that, aha. Once the killer will understand, if I have to get this, all I need to do is
Can love be a byproduct of the right behavior? पता है हमारा right product क्या होता है? मम्मी बच्चे को कहती है बेटा तू गुड बॉय बनेगा ना, अच्छा बच्चा बनेगा ना, हाथ पैर मुंह धो करके, होमवर्क कर करके, सो करके, फिर शाम को खेल के, फिर टीवी देखेगा ना, तो मम्मी तेरे को रात को आइसक्रीम देगी। और छोटू टीवी देखते ही साथ बोलता है चॉकलेट फ्लेवर, हाँ, कंडीशन स्पेल्ड, अग्रीमेंट साइंड, आई विल लिसन टू यू प्रोवाइडेड रात को आइसक्रीम। एक दिन चॉकलेट फ्लेवर, दूसरा दिन वनीला फ्लेवर, तीसरा दिन मैंगो फ्लेवर, चौथा दिन नो आइसक्रीम ओनली चॉकलेट, पांचवा दिन भेलपूरी, छठवा दिन सेव पूरी, सातवां दिन पूरी पूरी, नवा दिन पानी पानी, 10वां दिन यू लेफ्ट विथ नथिंग। And by the time you, the mother, you, the father, you, the society, you, the coach, have created a mindset. And the mindset is, if you want mummy, if you want daddy, if you want me to study, what will I get? फिर आ गया वही फॉर्मूला पे, get, get, get. सब घूम फिरा कर हमको सब रॉन्ग कॉन्शियसनेस का प्रोग्राम है। टाटा इंडिकॉम में मैं प्रोग्राम कर रहा था विद द टीम लीड्स, दे हैड ओनली वन प्रॉब्लम। उनका टीम के नीचे जो टीम लीडर है उसका नीचे वाला बोलता है ये लोग काम नहीं करने को तैयार हैं। पता है क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट पे काम किया, हमने इतना दिन रात एक किया, मिला क्या कंपनी से? हर चीज मिलना है फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज कंडीशनल। मिला क्या, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? एंड ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से लेकर आया फॉर्मूला, हम कर रहे हैं, द सोसाइटी इज बिल्डिंग इट। डोंट इक्वेट your presence with present, don't equate it with things. You can reward your child, but this is the best thing. Anyway, I'll tell you one example. घर में छोटा बच्चा है, माँ की तबीयत खराब है, माँ बीमार है, पता है वो छोटू को क्या कहती है? बेटा मम्मी का ना तबीयत ठीक नहीं, मम्मी नहीं चल सकती है, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? मम्मी एक दवाई खा के आधा घंटे में ठीक हो के फिर मम्मी खाना बनाएगी। छोटू कहता ठीक है, आधा घंटे के बाद खेल वेल के जब उसका मन करता है तब एक ग्लास लेके आता है और बोलता है ये लो पानी। मम्मी वो दवाई खाकर छोटू को किस करके, और मम्मी उसको कहती है तू मेरा ना लाडला बच्चा है, स्वीट बेबी, गुड, थैंक यू, हाँ अभी तू खेल, मम्मी आधा घंटे के बाद फिर खाना बनाएगी, ओके, तो मेरा राजा बच्चा है। छोटू 4 कदम जाता है, पीछे मुड़कर पता है क्या बोलता है? एक गिलास और लाऊं पानी? I don't know how many of you have experienced it. Oh, that kiss, that love. He needs it once more. And he's ready to fetch you another glass of water. Can you play with this beautiful emotion and power of love? God placed it on Gireesh. ये ब्रह्मा कुमारी sisters, you know more than, I mean, you have come here many a times. क्यों इतना? ब्रह्मा कुमारीज doesn't pay 1 rupee to them. They don't pay me 1 rupee, friends. So much of dedication, so much of, effort. क्यों? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उसका लव, उसकी आर्ट ऑफ पेरेंटिंग को अगर समझ गए ना, and bring it little into your family, believe me. But you have to see how God's parenting style is. Typical. आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं भी नेक्स्ट टाइम वी विल शेयर इट विद यू फ्रेंड्स। वो कभी डांटता नहीं है, वो कभी नेगेटिव नहीं बोलता है, हमेशा प्रोत्साहन। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज स्टेबल। आप करो नहीं करो वो घबराता नहीं है, वो परेशान नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता है। सो आई हैव अ वेरी वेरी आइडियलिस्टिक फिगर आउट देयर, ही इज अ हीरो फॉर मी। क्योंकि मुझे पता है सारी दुनिया बोलेगी गिरीश यू आर नॉट गुड, आई नो गॉड क्या बोलने वाला कल, टुमारो मॉर्निंग, यू नो व्हाट इज गोइंग टू टेल मी? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, दिल के टुकड़े बच्चे, नूरे रतन बच्चे, अरे सारी दुनिया जाए तेल लेने के लिए, तू बोल क्या करना है? आप बोलो ट्रेनर क्या करना है, आप बोलो मम्मी क्या करना है, आई एम रेडी टू डू इट। अब द डिफिकल्ट टास्क इज ओवर। अब पता है इसको अंदर से ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आहा, अब नो एफर्ट नीडेड। धीरे धीरे ट्रेनर उस रिंग को ऊपर उठाना शुरू करता है। किलर वेल को क्या चाहिए? हेलो, लव चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? You cannot teach a killer whale with a PPT presentation, JUMP, jump, RUN, run, WLK, walk, FLY, fly. Hello. All that needed is
आपके बच्चे से आपको क्या चाहिए? You want them to do good, you can be able to get it done. Can you do this? And once the D-Day comes, jam-packed, the whole the atmosphere is reverberating with the sound of people. There is a ring on top, it is lit with fire, and the killer whale is to jump. द किलर वेल को दुनिया से मतलब नहीं है, ऑडियंस से मतलब नहीं है, गलती से मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ एक व्यक्ति से एक ही चीज का मतलब है। आपके बच्चे को आईआईटी का डिफिकल्ट एग्जाम से मतलब नहीं है, 12-15 घंटा पढ़ने की डिफिकल्टी से मतलब नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कम लोगों को सिलेक्शन होता है, उससे मतलब नहीं है, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उससे मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक मतलब होना चाहिए, मम्मा का लव, डैड का लव। आपका बच्चा बोलना चाहिए, पापा आई लव यू। मैं ये मोबाइल फोन को सरेंडर करता हूं, हाथ नहीं लगाऊंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आई लव यू डैड। एंड लेट मी टेल यू, इट इज पॉसिबल। You know, my eldest child, 21 years of age, second year of engineering, उसको मार्क्स कम आए। मैंने उसको पूछा, तेरा मार्क्स क्यों कम आ रहा है? बोला, नहीं पापा, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, स्कूल में तो बहुत स्ट्रिक्ट था, थोड़ा मैं कंप्लेसेंट हो गया था, बट आई पिक अप। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आई एम अ वेरी ओपन फादर। मेरे को पता नहीं क्या ऐसा थॉट आया कि आई शुड चेक। मैंने थोड़ा सा प्रोब किया तो पता चला लड़की का मामला है। मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो उसका फोटोग्राफ है, बाइक में बिठा के घुमाता है, यहाँ वहाँ लेके जा रहा है, स्पेंडिंग मनी। मैंने थोड़ा बैंक अकाउंट सब देखा, मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा बेटा क्या चक्कर है? पता है व्हाट ही सेड? आपको पता चल गया? मैंने कहा पता नहीं चलना था क्या? बोला नहीं, अच्छा हुआ खुद पता लगा लिया, मैं सोच रहा था कैसे बताऊं, आपने मेरा भी एफर्ट अपने पे ले लिया। मैंने कहा बेटा, यू आर टेकिंग इट लाइटली। और जैसे ही मेरी वाइफ को पता चला, ओ माय गॉड, उनका तो अलग टेंजेंट पे गाड़ी चल रहा था, मैं इसको हैंडल कर रहा हूं, वो और ही कॉम्प्लिकेट कर रही है। पता है वो बेटे को क्या करी? बेटा तेरे को प्यार ही करना था तो कोई अच्छी सुंदर इंटेलिजेंट लड़की से करता। मैंने कहा शट अप, मैं ये बता रहा हूं कि दिस इज नॉट द एज। क्योंकि वो जिस लड़की से जिस फोटो दिखा ना, वो थोड़ी मोटी सी काली सी थी, अब इनको वो पसंद ही नहीं आई। मैंने कहा अरे यार, व्हाई आर यू मेकिंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड, प्लीज लेट मी हैंडल। एंड यू नो व्हाट दिस गाय गोज एंड टेल्स दैट गर्लफ्रेंड, मेरे घर वालों को पता चल गया, तू भी अपने घर वालों को बता दे, और ये लोग ज्यादा नाटक करेंगे तो भाग के शादी करेंगे। लुक एट हिज गट्स। मैंने पूछा तू कैसे जीवन जिएगा? बोला टैक्सी चला लूंगा डैडी, लेकिन लड़की को महारानी की तरह रखूंगा। लुक एट हिज होप। अनिश्चित भविष्य, इंजीनियरिंग नहीं पास है, अनपढ़ गवार हो, और तुम सुनहरा सपना ड्रीम कर सकते हो। लुक एट हिज करेज, ही इज रेडी टू फाइट द होल वर्ल्ड विथ नो मनी, विथ नो फ्यूचर। लुक एट हिज होप, लुक एट हिज गट्स, लुक एट हिज करेज। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? उस लड़की के चक्कर में वो सारी दुनिया से दुश्मनी मोल सकता है, आप मम्मी के प्यार में, आप पापा के प्यार में वो क्यों नहीं बोल सकता है, पापा 1 महीने के बाद एग्जाम है, इंटरनेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, आई लव यू डैड। लड़की के प्यार में इतना पावर, मम्मी पापा के प्यार में नो पावर। कमाल है। हेलो, प्यार तो प्यार ही होता है, देयर इज ओनली वन इमोशन। लास्ट थिंग फ्रेंड्स, पता है वो लड़की के प्यार में इतनी ताकत क्यों है और मम्मी और पापा का प्यार डाइल्यूट क्यों हो गया? क्योंकि शायद माता पिता ने हर चीज में उसको टोका, कंप्लेन किया, तेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों है, तेरे मार्क्स ऐसे क्यों हैं, तू सुबह जल्दी क्यों नहीं उठता, तेरा नाक क्यों बह रहा है, तेरा कपड़े इतने गंदे क्यों रहते हैं, तेरा रूम ऐसा क्यों है, व्हाई आर यू सो अनकेप्ट, तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे क्यों, तू बोलता ऐसा क्यों है, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा क्यों है। और पता है जब ये फर्स्ट टाइम कॉलेज में गया तो वो गर्लफ्रेंड ने उसको पता है क्या कहा? लेट अस अज्यूम दैट बॉय इज गिरीश। वो लड़की ने कहा, गिरीश तेरा तोते जैसा नाक कितना क्यूट है, तो कितना दुबला पतला है, तो ब्लैक जीन्स एंड येलो टी शर्ट टाइट पहनेगा ना, ऋतिक रोशन जैसा नजर आएगा, और शादी के बाद जब तेरे बाकी बच्चे बाल उड़ जाएंगे ना, तो उसका बाप राकेश रोशन जैसा नजर आएगा। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ somebody liked my nose, somebody liked me। मम्मी के लिए मार्क्स, क्लास वर्क, होमवर्क, कपड़े, बैग, रूम, कंप्यूटर, फ्रेंड्स, हेयर स्टाइल, नोज, टैटू, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है दोस्तों,
आपको क्या चाहिए? You also need love. So does the child also needs love. But if the parents' love is compensated with doing, believe me, it's going to be a hard time in future. Please play with a lot of love, a lot of peace, a lot of positive energy. That's what you are. ठीक है? चलो. We'll do meditation for 2 minutes. Yeah. Any questions you have? I mean, we can address it. I mean, I'll come down and you can ask me these questions. ठीक है ना? चलो. Sit in silence. Sit straight. I love kids. Believe me, friends. No stress. I can spend hours and hours and hours with me. You know why? They are full of energy, positive energy. We lack energy. We are so stressed. The moment you do meditation, understand certain realities, you will also have the same amount of positive energy. Meditation is a technique of generating, of creating the right energy. Your back straight, your body relaxed. Take a deep breath in and slowly release it. Again, a deep breath in and release it slowly. When my breathing is stable, is calm, so does my body become calm. My mind is also calm and quiet. I feel relaxed, peaceful. My mind dwells in the reality, the truth of life, that I am a peaceful being, happy being. I am an embodiment of love. Please experience it. In these moments of silence, feel light and relaxed. Your mind is completely silent. किसी बात का कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, बच्चों को लेके, भविष्य को लेके, जिम्मेवारियों को लेके, completely stable. Your entire attention and awareness is directed towards experiencing peace. I am a peaceful being. And when I'm discharging my responsibilities towards my family, I do it by being a peaceful mother, a peaceful dad. Peace is my innate quality, and today onwards, I will be a being of peace. I will do everything with peace, and I will get whatever I want. What I want is a beautiful life for my child, for he lives in the dream of tomorrow, and I completely believe in it. My care is not to control a child, is to give him a right environment, the right support,
And I am confident that my child will fly high and far and will lead a meaningful, purposeful, beautiful, happy life. And I can see this happening. My children, in the true sense, living life to its fullest. They are completely in control of their state of mind and feeling. It's easy for them to overcome the feeling of failure and convert it into a feeling of success. I thank the Almighty for this beautiful understanding. The archer is with me, and I will take time to allow the bow to be held in the hands of the archer, and I follow each and every direction, his Srimat. And God says, my dear child, don't worry, be peaceful, be happy, and do everything for your children with peace, with happiness, and the best will happen to you in your life. I feel relaxed and at ease and at peace. Slowly open your eyes if you have closed your eyes. With the same inner state of peace, please say Om Shanti. Rub your hands, put it across your entire face, your forehead, your eyes, your cheek, your chin, your lips. Thank you. Om Shanti.